Hello everyone, welcome back to my channel. So the festive season is here. I wish you all a very happy Durga Puja. माँ यानी नारी। और क्योंकि माँ का पर्व चल रहा है तो मैंने सोचा भारत में नारियों के प्रति हो रहे कुछ भेदभाव के बारे में हम कुछ बात कर लें। यूँ तो हम भारतीय नारियों की पूजा करते हैं, मगर कभी कभी उसी नारी का इस धरती पर आना हम में से कुछ लोगों को नहीं भाता। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम आज कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फीमेल फीटिसाइड। शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ डॉटर, she is a wife, she is a sister, she is a friend, guide and a teacher, the one without whom this world is a mere picture. Yes, woman या नारी समाज रूपी इस गाड़ी के दो पहिए समान हैं, स्त्री और पुरुष। अगर इन दोनों में से एक भी कमज़ोर हुआ तो समाज की गाड़ी चलना एकदम बंद। भारतीय नारी का नाम लेते ही हमारे सामने स्नेह, प्रेम, करुणा, ममता और सेवा संपन्न एक चित्र अंकित हो जाती है। परंतु दुख की बात तो ये है कि आज तक भारत में नारियों को उनका सही हक और दर्जा नहीं मिल पाया है। Having a child in many society is an exciting time. एक नन्ही सी जान का इस दुनिया में आने की खुशी और उल्लास सबके मन को नए उमंगों से भर देती है। When someone finds out that they're pregnant, everybody's first instinct is to ask, लड़का है या लड़की? And usually, whatever the answer is, it is met with excitement and happiness. लेकिन अनेक जगहों पे आज भी इस प्रश्न को बहुत ही गुरुत्वपूर्ण माना जाता है और एक नन्ही सी जान, एक लड़की का, एक नन्ही सी कली का इस दुनिया में आना एक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप माना जाता है। In the recent National Indian Census, the female to male ratio in India is 1.08 males for every female. In the United States, it is 0.97 males for every female, and the international ratio is 1.01 males for every female. This low ratio in India is the result of the limitations that the society puts on the birth of a female child. फीमेल फीटिसाइड या कन्या भ्रूण हत्या भारत में लड़कियों के प्रति हो रहे भेदभाव का प्रारंभिक पड़ाव माना जाता है। Talking of female feticide, it is a gender selective abortion in which a female fetus is illegally terminated solely based on the reason that the fetus is a girl. ये एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो गांव से लेकर शहर तक हर जगह अपना जहर फैला चुकी है। The government has also made some attempts to lower this rate of female feticide. Acts such as the Preconception Prenatal Diagnostic Techniques Act, usually known as the PCPNDT, it was enacted in 1994 by the Parliament of India, and it prohibits prenatal sex determination. But still people keep on finding new alternatives to detect the sex of the child and keep on performing the abortion. Female feticide still continue to occur and is now a very frequent and common crime. Now coming to the most important part of this topic, that is the reason of female feticide and how to find a solution to fix it. According to me, the most effective way to end female feticide is to find how and what are the reasons of its existence in this society and then take measures accordingly. Female feticide is the result of the gender bias society in India that discriminates against women and believes them to be less valuable than men. In this patriarchal society, sons are more preferred than daughters.
may it be economically or socially, girls are seen as weak and are less valued. समाज के कई लोगों का तो ये भी मानना है कि लड़कियों को जन्ना लड़कों को जन्ने से महंगा पड़ता है, क्योंकि बेटियों की शादी में भारी रकम का दहेज देना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दिस दहेज प्रथा और डाउरी सिस्टम, another most important reason of this female feticide is the belief that without a man or a son, there will be no one to protect the family lineage, perform the special rituals, and protect the family name. And this wraps up my mind around the fact that girls are consistently less valued by this society. So talking about the solution, with a lot of awareness, consideration and understanding, we can bring a shift in the beliefs and perception of the society to give equal space to the girl child. Besides, there is no past, present or future without a woman. And female feticide should be considered a murder of humanity and mankind. अगर आज हमने अपनी बेटियों का भविष्य नहीं संवारा तो आगे जाकर इसका परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है, और यही परिणाम होगा जो आगे जाकर इस समाज के लिए एक श्राप बन जाएगा. So a little change in our attitude and mindset is all that we need to welcome daughters in our heart and in this world. Paradise lies at the feet of the mother. We all need mother, sister and wife. Then why not a daughter? Save girl child. Stop female feticide. So if you all like my opinion and thoughts on this topic, then please like the video, subscribe to my channel for more contents like this, and please press the bell icon to be notified whenever I post a new video. Thank you.